All right. So the topic that we have today is actually one of the easiest topics in O levels chemistry and IGCSE chemistry as well. And the idea is energy changes. Okay. And I would like to illustrate this with a simple example. The energy is required to do any work that we do. Okay. Now, one process through which humans gain energy is, does anyone know what that process is? How do we gain energy? Respiration. Excellent. So we basically take glucose, C6H12O6. By the way, this is the formula of not just glucose, but also fructose. But the formula is the same, but the structure is different. We need oxygen for this to happen. And through a whole process that is there in our body, we get carbon dioxide plus water that can be exhaled. And this is the balanced equation. This process releases energy overall. So when this is done, energy is given out. And this is a symbol that we have to show that energy is being given out. Minus means it is going out of whatever you had. And delta H is a symbol for change in energy. So the change in overall energy. यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एनर्जी को माइनस करूं तो इट विल बी नेगेटिव. इन अदर वर्ड्स, शुरू में जितनी एनर्जी थी, लेट मी कॉल इट E1, it was more than the energy at the end. And that is why there was an overall decrease in the energy that the system had. Now, the opposite of this system, this equation, even though it's not the opposite in terms of how it is done, it's just the opposite in terms of this. This is carbon dioxide plus water. They are reacted together and they release oxygen plus glucose. Plants do it using chlorophyll. And we call this process photosynthesis. So this is respiration. And this is photosynthesis. We need sunlight to do this reaction. And light, as you know, is a form of energy. So sunlight brings the energy that is used to make this. And exactly that much energy is released when this process is done. And this is called a positive delta H. Positive means energy is taken in. The overall energy, the one energy that you had in the beginning and the energy that you have at the end, this is bigger, the energy at the end. And that is why this is called an endothermic reaction. We say energy has entered the system. So on one side, we have exothermic reactions. And on the other side, we have endothermic reactions. What's the difference? In exothermic reactions, overall energy is released, energy loses. The system gives the energy out. In endo, overall energy is taken in. So अगर मैं इसका graph बनाऊंगा, and we call that energy profile diagram. So energy profile diagram is basically a way for us to know how the energy is changing when this happens. So here's the thing. हमारे पास ये graph है that we have for both of these. Now, of course, I will generalize this equation now. And I will say on the left side, we have reactants. On the right side, I have products. And that's how we do this reaction. Now, how will this happen? Before carbon dioxide can make glucose, the carbon, which is already bonded to oxygen like this, must break its bonds. If carbon doesn't break the bonds, then it's not free to make anything here. Similarly, water is like this. So water must break these bonds before this hydrogen can be used to make glucose. I need atoms. I don't need molecules if I want to make new molecules. So from here, these are all broken down into atoms. And those atoms are then rebonded to make this. This process where atoms are made, it will need to be bond breaking to happen. Because I want to break all the bonds that are already there. And then over here, bonds will be made. New bonds are made for this reaction to continue. Okay, so here's the thing.
We start at the reactants level of energy in both of these. So this is my reactants. I end up at the product. In exothermic, product has basically less energy than reactant. So product should be here somewhere. It should be below. इसके नीचे होना चाहिए. On the other hand, reactants have gained energy to become product in the endothermic process. Energy has entered the system. So this should be higher up. This should be somewhere above this. So this is where my products are in an endothermic reaction. Can they go straight like this? Turns out, no. Reactants have some bonds that I need to first break. And to break the bonds, I need to supply energy, which means I have to continuously put energy into the reactants so that eventually they have so much energy that they break the bonds that they have. So we say that they are going to gain energy and they're going to get to a level that is much higher than where they are right now. And it is true regardless of what kind of reaction you do. So far, there's a lot of similarity. This process is where I break the bonds because that's the only way I know. I will come back to this point that right now, this is the only way I know that I have to break the bonds here, get atoms, and then those atoms will make this. This is a way. This is a route. This is a pathway. Okay. So I have to break these bonds, and by breaking them, I get to a point where this is happening. Okay. So this process, जितनी एनर्जी उसको इस काम के लिए चाहिए कि रिएक्टेंट्स देखो यहां से स्टार्ट हुए थे and they got all the way to the top here. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं activation energy. And turns out it is the same here as well. Activation energy is the minimum energy required to start a reaction. So the Rx here means reaction. Another important point, do you notice that in both of them, activation energy is up? Activation energy is always positive. It is always absorbed. It is always endo. Okay, I get to a point where I made the atoms and now I must make new bonds so the product is made. So now new bonds will be made and that will give me the product. Notice that energy of the system was here, went up, went down, and now it has stabilized here. This side is where energy is absorbed. This side is where energy is released. I can say that this is bonds broken and this is bonds made. In other words, yahan pe, which I'll call transition state, this is where the highest level of energy is available. To get to this point, I broke the bonds. To get from this point to product, I made new bonds. ये वो point है जहां पे कोई bond exist नहीं करती. You can get situations where only the bonds are broken. जिसका मतलब क्या है? कि आपके पास, let's say you started with some molecules or lattice and you ended with individual atoms or ions. No bonds in there. In fact, इतनी free होते हैं वो कि वो gaseous होते हैं हमेशा, क्योंकि गैस में कोई intermolecular force भी exist नहीं कर रही होती. All the forces, all the bonds are broken. That is how you get to the transition state. And then you make new bonds, which means you go back from atoms to new molecules and lattice. So this side, जहां पे वो molecule से atom की तरफ आ रहा है, ये positive है. और वापस जिधर जा रहा है वो negative है.
लेकिन अगर उसको यहां से बॉन्ड्स ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगे और वापस जाने में एनर्जी कम लगे, तो हम कहेंगे पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो ओवरऑल एंडो हो जाएगा। अगर किसी रिएक्शन को मॉलिक्यूल से एटम बनने में कम एनर्जी लगे लेकिन वो नई बॉन्ड्स बनाने में ज्यादा रिलीज कर दे, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक हो गया। So basically the point I'm trying to make is that how are bonds related to energy? So we say that bond making is exothermic. You make new bonds, energy is released. It's like if you have, let's say, you have your hands, take your hands out. सामने रखो, अपने हाथों को देखो. Okay. Now, imagine if these two hands that you have, they are two different atoms. अब इन दोनों हाथों को जोर से पास लेके आओ, and you will see a sound. That's a clap, right? You bring your hands together and energy is given out. ये bond making है. And imagine if your hands were tightly packed together like a fist, और उसको तोड़ना, हमने दोनों हाथों को अलग करना हो, you will need to supply energy. That is endothermic, when you have to supply energy. So bond making is exothermic, it releases energy. Bond breaking, endothermic, absorbs energy. For example, अगर मैं कभी आपको इस तरह की सिचुएशन दे दूं, मैं आपसे कहता हूं मेरे पास वाटर है और इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स अलग-अलग हो गए. I have just broken the bonds. So I have given energy here. And it will always be like this. Whenever you want to break in bonds, you have to supply energy. Whenever you want to create bonds, you have to release energy. In fact, bonds automatically would release kar dengi. And if I start with some atoms, notice that I'm saying atoms. I'm not writing H2, I'm writing 2H. यानी कि हर atom अलग-अलग है. And I bring them together to make water, this will be exothermic because मैंने bonds create किए हैं. अच्छा, समटाइम्स हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं होता लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं. बॉन्ड्स नहीं हम बोलेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. फॉर एग्जांपल, मेरे पास वाटर ही है और वो गैस है और मैं उसको बहुत फ्लैश फ्रीज कर देता हूं, सॉलिड बना देता हूं. मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किए हैं यहां पे. ये पॉजिटिव डेल्टा एच है, सॉरी ये नेगेटिव डेल्टा एच है. बिकॉज फोर्सेस क्रिएट हुई हैं, दे आर बीइंग मेड. और अगर मैं लिक्विड को इवेपोरेट करता हूं या उसको बॉयल करता हूं, तो आई हैव टू कंटिन्यूअसली हीट इट अप, क्योंकि मैं सारी की सारी बॉन्ड्स को तोड़ रहा हूं. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर बीइंग ब्रोकन. और ये एनर्जी, दिस वन इज कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन स्टेट चेंजेस. जो ये एनर्जी है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है. ये हम मेजर कर सकते हैं, ये थर्मोमीटर से पता लग जाती है. ये नहीं पता चलती. फर्क क्या है इन दोनों में? इसमें बॉन्ड्स बनती हैं, इसमें सिंपल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनती हैं, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस. बाय द वे, इफ आई वांट टू फिगर आउट कि जब बॉन्ड्स बन रही हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हो रही है, तो फिजिक्स में हम उसके लिए एक तरीका पढ़ते हैं कि एनर्जी, हीट एनर्जी को क्यू बोलते हैं, इक्वल्स एम सी डेल्टा टी या डेल्टा थीटा. इसको बोलते हैं एम कैट. ये वो एनर्जी है जब भी बॉन्ड्स ओवरऑल क्रिएट या ब्रेक होंगी तो रिएक्शन रिलीज या अब्सॉर्ब करेगा.
लेकिन जब भी वैन डर वाल्स फोर्सेस क्रिएट या रिलीज होंगी, हम लेटेंट हीट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और इसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि अच्छा हमने फ्यूल बर्न किया था, उस फ्यूल से वाटर हीट हुआ है, तो हम देख लेते हैं कितना फ्यूल बर्न हुआ है, और उस फ्यूल के बर्न होने को कंबशन बोलते हैं, और उससे मुझे पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। क्लियर एवरीबडी? व्हाट इज द डिफरेंस इन बॉन्ड्स वाला रिएक्शन एंड द फोर्सेस वाला प्रोसेस? अब आप ही चलते हैं इस पे। हमने बॉन्ड्स को ब्रेक किया तो एक्सो, और सॉरी एंडो, और बॉन्ड्स को फॉर्म किया तो एक्सो। तो व्हाट मेक्स एनीथिंग ओवरऑल एक्सो और ओवरऑल एंडो? बहुत सिंपल है, बॉन्ड ब्रोकन इतना सा है, बॉन्ड्स फॉर्म्ड इतना ज्यादा है, ये जो इनका फर्क है ये डेल्टा एच है। Notice that delta H starts at the reactants, ends at the product. यहां पे भी ऐसी होगा, it starts at the reactant, ends at the product. This is delta H. Now all you need to know is how does it relate to the starting point? End वाला point ऊपर है या नीचे है? This is lower, this is higher, ये negative हो गया. This is higher, this is lower, ये positive हो गया. ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने शेप्स देखी होंगी, आपने देखा होगा कभी ये ऐसे सर्कल हो जाता है, कभी आपने देखा होगा किसी ग्राफ में वो कई दफा हमें लेट सपोज वो इस तरह करके दिखाते हैं। टर्न्स आउट द शेप डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट इट गोज अप व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड गोज डाउन व्हेन द बॉन्ड्स आर मेड। ठीक है, समझ आ गया? एनी क्वेश्चंस? अब अगली बात ये है कि इज देयर अ वे टू चेंज इट? इज देयर अ वे कि मैं डेल्टा एच को या एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर लूं? सो जरा देखते हैं। डेल्टा एच दो चीजों पे डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्ट कहां पे है और आपका रिएक्टेंट कहां पे है। तो अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, ना आपने प्रोडक्ट चेंज किया ना आपने रिएक्टेंट चेंज किया, एक ही रिएक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने वाटर ही बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ना आपने प्रोडक्ट बदला ना आपने रिएक्टेंट बदला, आपका डेल्टा एच बदल ही नहीं सकता। सो डेल्टा एच रिमेन्स अनचेंज्ड, लिख लेते हैं कहीं पे, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथवे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, इससे फर्क पड़ता है कि वो रिएक्शन क्या है। डिपेंड्स ऑन रिएक्शन इटसेल्फ। वाटर बनाने है, हमेशा -57 किलो जूल्स पर मोल डेल्टा एच होगा जब भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, दुनिया में कहीं पे भी आप कर लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे यही होगा। Delta H does not change if you change the method. But एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है कि ट्रांजिशन स्टेट यानी कि हाईएस्ट पॉइंट और रिएक्टेंट कहां पे है। तो हाईएस्ट पॉइंट तो हम चेंज कर सकते हैं। देयर आर मेथड्स थ्रू विच वी कैन चेंज द हाईएस्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थिंग्स कॉल्ड कैटलिस्ट। आपने ट्रांजिशन स्टेट की बात की ना, ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि आपने एटम्स बनाए और एटम से वापस मॉलिक्यूल बनाया, तो हम एटम की बजाय कोई और तरीका ढूंढ लेते हैं। हम सारी बॉन्ड्स नहीं तोड़ते, दो बॉन्ड्स को तोड़ के दो नहीं बना लेते हैं, हो सकता है हमारा रिएक्शन हो जाए। अब ये तरीका, ये जो शॉर्टकट है उस रिएक्शन को करने का, ये हमें मिलेगा कैटलिस्ट से। सो कैटलिस्ट टेल्स अस ऑफ अ शॉर्टकट टू डू अ रिएक्शन। सो यहां से अगर मैं एक लोअर लेवल पे आता हूं और अगर फिर भी रिएक्शन हो जाए, तो ये जो मेरे पास रिड्यूस्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। Similarly, I can start here and maybe this point is where I can end and then go back. So this energy is the energy of catalyzed reaction. So I can say that activation energy depends on pathway और ये चेंज हो सकती है। हाँ, रहेगी ये पॉजिटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन करते हुए वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दे, इम्पॉसिबल।
इट विल ऑलवेज नीड द एक्टिवेशन एनर्जी, को कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आपकी कहीं पे मौजूद हाई लेवल पे हो सकती है, कहीं पे वो लोअर लेवल पे हो सकती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन पाथवे। आई विल शो यू अ मेथड। एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल है तो इसलिए परेशान नहीं होना, जिस पे टेंशन, अगर कोई समझ नहीं आती मुझे पूछना। मैं एक इम्पॉसिबल रिएक्शन करने लगा हूं। ये रिएक्शन दुनिया के किसी भी रूल के मुताबिक कानून ये है, ये होना ही नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल होना चाहिए इस रिएक्शन को नेचर में। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक iodide ions and I'm going to react them with this ion which is called peroxidized sulfate, और इससे मैं आयोडीन और सल्फेट बनाना चाहता हूं। कैन एनीबडी लुक एट दिस एंड टेल मी कि ये रिएक्शन इम्पॉसिबल क्या है इसके अंदर? Why is this reaction impossible? Okay, how does any reaction happen when particles collide? ऐसे ही है। यहां पे मैं किन पार्टिकल्स को कोलाइड करना चाहता हूं? The left particle has a negative charge. The right particle also has a negative charge. What will happen if I bring a negative thing close to another negative thing? They will repel. They will repel. Exactly. That is law of nature. तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल होना चाहिए। वी से द रिएक्शन हैज अ वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन आई कैन यूज समथिंग दैट कैन हेल्प मी हियर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। डज एनीबडी अग्री, एवरीबडी अग्री कि ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है? कैन एनीबडी टेल मी ये क्यों रीडॉक्स रिएक्शन है? जी, यू आर राइट कि इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन हो रहे हैं। लेट्स आइडेंटिफाई कहां पे लूज या गेन हो रहे हैं। लेट मी पुट द चार्जेस। -1, -2, 0, -2। जरा गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये -1 से 0 पे गया, यानी दिस हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। Yes, Suruj and Iman, you're both correct. And this one has an overall -2 charge, but यहां पे it has overall -4 charge, क्योंकि ये 2 हैं और ये 2 -4। This has gained 2 electrons. तो टेक्निकली हो ये रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहा है, बट बिकॉज दे आर बोथ नेगेटिव वो कर नहीं पाएंगे। बट देयर इज अ थिंग दैट कैन हेल्प मी आउट, एंड दैट इज ऑल आई नीड टू डू इज कोई ऐसी चीज हो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से ले और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दे। आई नीड समथिंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स हेयर एंड ड्रॉप इलेक्ट्रॉन्स हेयर, कि वो एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स लूज करे। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट कैन डू इट? Anything that changes its behavior? Electrons gain karna, lose karna, all of that happens in valencies. Is there anything that can change its valencies, that can transition from one to another state? There is a whole portion of the periodic table filled with those things. Go and take a guess. Yes, Rayan, you're absolutely right. Transition metals. Transition metals are able to change their valencies during a reaction. यहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन लूज कराने हैं ना, तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करे, ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं। यहां पे कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करे, ट्रांजिशन मेटल्स करते हैं। लेट मी शो यू हाउ दैट विल हैपन। S2O8 में मैं आयरन 2 ऐड कर दूंगा। देखो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, जस्ट लुक एट द चार्जेस, और ये एक सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है। चार्ज अगर इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। बस इतनी सी बात। इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, डिक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ये सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। अब आपने चार्जेस के ऊपर फोकस करना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। व्हेन आई डू दिस रिएक्शन, दिस इज व्हाट हैपेंस। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं, इक्वेशन को भूल जाएं कि क्या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, भूल जाएं। जस्ट लुक एट द चार्जेस। ये +2 से +3 हुआ है। क्या हुआ है? इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया, लूज किया? लूज किया। इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ताकि ये -4 हो जाता, वो आयरन ने कर दिया।
आयरन ने कहा यार तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आयोडाइड से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो मैं जानूं वो आयोडाइड जाने, तुम ये इलेक्ट्रॉन्स पकड़ो. And that's what iron 2 has done. Iron 2 has given electrons to this ion. और इससे बन गया आयरन 3. अब आयरन 3 क्या करेगा? आयरन 3 आयोडाइड के पास जाएगा. And again, I want you to focus on the charges only. बाकी किसी चीज को गौर नहीं करना है. Now, look at the charges and tell me, has iodide lost electrons? No. It has. Because ये -1 है और ये 0 है. नंबर कम हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए. नंबर ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं. सॉरी, उल्टा बोल गया हूं. My bad. Number has gone from -1 to 0. Number has gone up, electrons are lost. So iodide has lost electrons. And iron went from +3 to +2. It has gained electrons. क्या आपको वही दो चीजें जो चाहिए थी बन नहीं गई? और एक और मजे की चीज हुई है. I had iron 2 in the beginning. I have iron 2 at the end. This clearly shows that iron 2 has been recreated. It is unchanged at the end of the reaction. There is a word for these things that are unchanged at the end of the reaction. Does anybody know what those are? Catalysts. Catalyst क्या कर रहा है? मतलब देखो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा था. आयरन 2 ने कहा मैं इनडायरेक्टली करा देता हूं. हुआ वही है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं और इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं. डायरेक्ट नहीं हुए, इनडायरेक्टली हो गए. ये एक मेथड था, एक रूट था, एक पाथवे था. ये एक नया मेथड, नया रूट, नया पाथवे आ गया है और ये कैटलिस्ट ने पॉसिबल किया है. सो इसे कैटलिस्ट की 3 बातें. इट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथवे. इस पाथवे की एक्टिवेशन एनर्जी वाज टू हाई, इसकी बहुत कम है. विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, और जब एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है तो रिएक्शन भी जल्दी होगा. स्पीड्स अप द केमिकल रिएक्शन. And lastly, iron 2 was created at the end, remains unchanged at the end. ये 3 बातें जो चीज करे वो कैटलिस्ट है. एक काम करना है, उसको करने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा और वो तरीका आसान हो जाएगा. ये कैटलिस्ट का काम है. मैं एक कैटलिस्ट हूं आपकी जिंदगी में. आपने ओ लेवल्स करना है, आप 10 किताबों से पढ़ सकते हो, 50 पेपर्स कर सकते हो. आई एम हेयर, माई जॉब इज टू मेक श्योर कि आपके लिए काम आसान हो जाए, आपका वक्त कम लगे इसके ऊपर. ये कैटलिस्ट का रोल है. आपके पेरेंट्स आपकी जिंदगी में, आपने कामयाब होना है, वो पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं. आपकी बहुत सी परेशानियां, तकलीफें खत्म करते हैं, कम करते हैं, खुद टेंशन लेके आपकी जिंदगी आसान करते हैं. वो आपकी जिंदगी के सबसे बड़े कैटलिस्ट हैं. Now, I'll give you another example of this. Chemical reactions में क्या होता है? इतनी डीप बातें नहीं करनी चाहिए. Here's another reaction. ये रिएक्शन जो है ना, बहुत स्लो रिएक्शन है और रिवर्सिबल है और इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और ये बहुत ज्यादा रिएक्शन अच्छी तरह से हो नहीं पाता. लेकिन इसी रिएक्शन को करने का एक नया तरीका भी है. वो तरीका ये कि अगर हवा में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है.
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 के साथ रिएक्ट करता है और उसे SO3 में कन्वर्ट कर देता है. Do you see anything that did not change during this reaction? ये जो शुरू में भी थी और एंड पे. एक्सीलेंट. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो शुरू में भी है, वो एंड पे भी है. The 2 is just for balancing. 2 का as such role नहीं है. It's mainly this thing. So we say nitrogen monoxide is a catalyst. क्यों? Has it reduced the activation energy? Yes. Has it provided a different path? Of course. पहले वो direct कर रहे थे, slow था. अब वो indirect कर रहे हैं, 2 steps में कर रहे हैं. Different pathway है. ठीक है? Rayan, are you shouting or are you telling me nitrogen monoxide? And then we have this nitrogen monoxide creating SO3. वही जो start में है, वही end पे product है. उन्हीं चीजों ने react किया, उसी चीज को produce किया, but through a different method. Okay? And that is why this is a catalyst, speeds up the reaction. And that is why, by the way, this happens in the air and it produces sulfur trioxide. And sulfur trioxide, if it dissolves in water, it produces H2SO4. और ये अगर rain water हो, तो इसको हम बोलते हैं acid rain. So if SO3 is being produced in the air, that is a dangerous thing. But if it is produced in a factory, it's a useful thing because we can make H2SO4 from this. And NO, we should make sure ये हवा में ना जाए. और ये कैसे रोकेंगे हम इसको? ये बनती है गाड़ियों के इंजन में, तो हम कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं कि ये प्रोड्यूस ना हो. So ये हो गए catalysts. Coming back to this, we now know that in a chemical reaction, energy is created. Basically, energy is released or absorbed. Energy is absorbed when bonds are broken. It is released when bonds are made. If in a reaction only this part happens, it is endo. If only this part happens, it is exo. If both of them happen, we have to look at the values. हमें देखना पड़ेगा कितनी एनर्जी उसमें से ब्रेक हुई है, कितनी एनर्जी उसमें से रिलीज हुई है. I'll take a simple example here. These are called bond energy values. I'm just going to make values up myself. Now, does anybody know what we use in petrol? What molecule is there in petrol that we use to burn it? जो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होता है ना, हम कहते हैं कि ये हाई ऑक्टेन है. हाई ऑक्टेन का मतलब है कि उसमें ऑक्टेन ज्यादा है. ऑक्टेन का ये फॉर्मूला होता है C8H18. When it burns in oxygen, it produces CO2 plus water. If I balance it up, I have 8 carbon dioxide, 9 water, 23/2 oxygen made. So yes, this is hydrocarbon, you're right. And this is hydrocarbon with 8 oxygens, 8 carbon, तो इसको मैं octane बोल देता हूँ. अच्छा, अब here's the thing. Octane का structure ये. और ये जो मैं lines लगा रहा हूँ ना, ये basically hydrogen के साथ इसकी bonding है. और oxygen का structure है ये. और मेरे पास 23/2 moles of oxygen होंगे, तो ये रिएक्शन होगा और इससे बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 8 मोल्स और 9 मोल वाटर. ये वो बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ना है, और ये भी वो बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ना है, और ये वो बॉन्ड्स हैं जिनको बनाना है. When these are made, energy is released. When these are broken, energy is absorbed. अगर ये चीज ज्यादा होगी और ये चीज कम होगी, तो ये ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो जाएगा. इट विल बी अ गुड फ्यूल. अब जरा ट्राई करते हैं. लेट्स सी कि ये ऑक्टेन, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन से मुझे कितनी एनर्जी मिलती है. दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच या मोलर एंथैल्पी, या इसको हम किलो जूल्स पर मोल में मेजर कर लेंगे. ओके, सो फॉर दैट आई नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि भाई बॉन्ड्स कितनी तोड़नी है. सो लेट्स सी. कार्बन की कार्बन के साथ ये बॉन्ड है. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 such bonds that I need to break. So energy of bonds that I must break
is I have 7 carbon-carbon bonds. Okay. I have 1, 2, 3, इस तरह करते जाऊंगा 23, sorry, not 23, 18 carbon hydrogen bonds. I also need to break 23 and a half of these bonds. Again, half bond क्या होती है? कुछ भी नहीं, लेकिन half moles तो हो सकता है. Notice this is double bond, not single bond. Okay, so these are all the bonds that I need to break. Let me put the energies in there. Carbon-carbon की जो bond है, उसकी energy is, I'll need to look it up, 350. One carbon-carbon bond, 1 mole of that, if I need to break it, I need to supply 350 kilojoules of energy. Carbon hydrogen bond को अगर मुझे तोड़ना है, I need to supply 410 kilojoules of energy. Oxygen bond को अगर मुझे तोड़ना है, तो I need to supply, I'm just googling these values, so this is 496 kilojoules. So can anybody calculate for this for me कि total कितना होएगा? In the meanwhile, I'll measure how much energy are being released of bonds made. ये वो energy है जो release होती है. So ये तो यहां से होनी है. अच्छा, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हैं? 2. Do you pay attention? ये देख लें. One carbon dioxide molecule has 2 such bonds. So I need to break 8 molecules with each with 2 carbon oxygen bonds. And I need to break 9 water molecules and 9 moles of water molecules, each with 2 of these bonds. So 9 times 2 OH bonds. I again Google these values. 16 times carbon oxygen bond is how much is it? 740. And 18 times hydrogen oxygen bond is 460. Okay, let's calculate it. So 16 times 740, 11,840, 8280. So that means total 20,120 kilojoules of energy is released when these are made. Acha, how much is broken? 2450 plus 7380 plus 5704. I'll add them all up. 15,534 kilojoules is absorbed. So overall क्या होया? Thank you, Iman and Faraz. Overall, I will get 15,534 is what I invested, that I gave in, and 2120 that I got out. So overall, my delta H is minus 4586 kilojoules when 1 mole of this thing is burnt. That's a lot. And we use it to power our car engines. Of course, every fuel has a different delta H. And if I were to generalize this, I can say that delta H is energy of products minus energy of reactants. एक ये तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप कह सकते हो एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, जो कि पॉजिटिव होती है, माइनस एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स मेड, क्योंकि वो नेगेटिव होती है, एंड दैट्स आल्सो डेल्टा एच. ओके, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस. नाउ हियर्स द थिंग, ये है 1 मोल की, तो अगर मैं आपको 3 मोल कहूंगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे. आपको वो आधी मोल कहता हूं तो आप मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दोगे. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू दिस थिंग. अगर मैं इसका एमआर देखूं तो हमने एमआर पढ़ा था ना, तो एमआर ऑफ ऑक्टेन इज आई थिंक 114, यानी कि 114 ग्राम ऑक्टेन हो तो मेरे पास इतनी एनर्जी रिलीज होगी. हाउ डू आई नो इट्स 1 मोल? क्योंकि इक्वेशन में ये 1 मोल था.
सो 1 मोल ऑक्टेन बर्न हो या 114 ग्राम ऑक्टेन बर्न हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एग्जामिनर मुझे कहते हैं कि 228 ग्राम को बर्न किया तो भाई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्योंकि वो भी तो 114 टाइम्स 2 है। सो वी हैव अ मेथड हियर। ऑल आई नीड टू डू इज, अगर मुझे पता है कि 114 ग्राम बर्न करके 4586 जूल्स किलो जूल्स रिलीज करता है, तो अगर मुझे एग्जामिनर कहता है कि 1 kg से बताओ तो मैं कहूंगा 1000 विल डू x। And this is a ratio method. For those of you who prefer this method, that is also correct. Cross multiply and you'll get your answer. So it all comes down to what you're more comfortable with. अगर आप ratio method के साथ इस तरह से unitary method के साथ comfortable हैं, use this. And if you're comfortable with the ratio method, use that. But we can easily figure out the mass and how it relates to energy. And yeah, that's it for today.